Welcome to this video. This video is about the addition and subtraction of the surds. Before I start, kindly subscribe to my channel. इस वीडियो को देखने के लिए, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है कि सर्ड्स क्या होते हैं, तो उसकी मेरी एक सेपरेट वीडियो है। तो आई विल एडवाइज कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तो फिर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर आपको उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बड़ा इजीली जो है आपको समझ आ जाएगी। Anyhow, question number 1 is that we have to add these two surds. So first step will be, you will write this as 4 under root 2 plus, as you know, add mean plus, so 2 under root this one. हमने जो एक वीडियो पहली वीडियो थी उसमें इसके कुछ रूल्स को मैंने डिस्कस किया था। तो उन रूल्स में से थर्ड रूल था कि व्हेन देयर आर टू सर्ड्स और मिडिल साइन प्लस माइनस हो तो देन वी टेक कॉमन। तो हियर वी हैव टू स्क्वायर रूट एज कॉमन, सो टेकिंग दिस एज कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट यू विल हैव 4 प्लस 2 है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो बाद में मैं आपको उसको बताऊंगा। यहाँ पे ये देखो अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, उसको मैंने कॉमन किया। तो ये जो है 4 है, यहाँ पे आपका 2 है। सो अंडर रूट 2 और इन दी ब्रैकेट जो है वो आपका 6 है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 6 अंडर रूट 2 है। याद रखिएगा, जो सर्ड होता है इट शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट हैंड साइड। जो नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो यहाँ पे 6 था, इसको आपने लेफ्ट पे लिखना है, और जो सर्ड है that will come on the right hand side. अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, आप इसमें इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इफ यू फील कि सर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, कि इन दोनों का जो सर्ड है सर वो सेम है, तो इट मीन्स के फिर आप जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 है, तो जैसे जिस आप इसको 4 को एज अ कॉफिशिएंट समझे, यहाँ पे भी इसका ये एज 2 जो है ये कॉफिशिएंट है। अगर इस सर्ड सेम है तो 4 प्लस 2 करें वो 6 बनेगा, और फिर ये अंडर रूट 2 को आप ऐसे ही लिख दें तो आंसर आपका ना सेम आएगा। जस्ट लाइक अगर आप लिखा होता है 4x है और प्लस 2x है, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं 6x। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अच्छा, इस अलजेब्रा में जो हम करते थे तो ये भी जस्ट लाइक वैसे ही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाइड दी सर्ड्स। Again, you can see 2 under root 3 और plus 7 under root 3 है। So step number 1 ये है कि taking under root 3 as common. तो in the bracket you have 2 plus 7. So under root 3 in the bracket we have 9. तो जो final answer है वो है 9 under root 3 है। तो this is the final answer. और जैसे मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में, अगेन वी हैव सेम सर्ड्स है। तो अगर सेम सर्ड्स है तो ओके, आप मिडिल साइन प्लस है तो 2 और 7 को ऐड करें, 9 है और अंडर रूट 3 है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है। नाउ वी हैव डिफरेंट सर्ड्स। अब ये अंडर रूट 5 है, ये 45 है, तो अब वो टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते जैसे भी हम कर रहे थे कि उनको प्लस कर रहे थे, नो। अब आपके सेम सर्ड्स होंगे तो फिर आप कर सकते हैं। तो फॉर दिस 45 के अब आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके प्राइम फैक्टर से आपने स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 है, 3 1s द 3 5s द, अगेन द टेबल ऑफ 3 5s द 15 है, ठीक है, और 5 1 is the 5 है। Now we have 3 square. So 2 under root 5 will remain same, plus now you will just write 3 square multiplied by 5 whole square root. Okay, 45 की जो वैल्यू है हमने पुट कर दी। Okay, again no change in the first third. तो here you can see अब square और square root, ठीक है, they will cancel each other, और ये जो 3 है इट विल कम आउट, और इस 5 का तो स्केयर है नहीं है तो इट विल रिमेन इनसाइड। सो नाउ वी हैव सेम सर्ड्स, दोनों के देखें 5 स्केयर रूट 5 स्केयर रूट है। ओके,
अब आप कॉमन वाला वो स्टेप करना चाह रहे हैं वो कर लें, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अब 2 + 3 करें, ये 5 है, और सर्ड को बस आप एक दफा ही लिख, ठीक है, मैंने यहाँ पे जरा डायरेक्ट कर दिए। अगर किसी का कोई बात सही समझ नहीं आई, इट मीन वो कॉमन भी ले सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 में भी जस्ट लाइक क्वेश्चन 3 है कि दोनों के सर्ड्स जो है वो डिफरेंट है, बट वी कैन मेक द फैक्टर्स ऑफ 50। So in the neat work, you will make the factors of 50, prime factors in the table of 2, then the table of 5. Okay, अब 5 का स्केयर है, ठीक है, इट विल बी 2 × 5 स्केयर, ये है 50 के फैक्टर्स, और -2 √2 है, ये एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ दिस स्केयर और स्केयर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस 5 विल कम आउट, and this 2 will remain inside because it has no scale, and then -2 और ये √2 है। now we have the same surds है। ओके, आप इनको डायरेक्ट पी कर सकते हैं, 5 - 2 है सर, ठीक है, तो इट विल बी 3 एंड देन √2। आप इनके जो बाहर जो नंबर्स हैं इनको आप माइनस करें, मिडल साइन माइनस है यहाँ पे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू and their surd will remain the same, उसको आपने एक दफा ही लिखना होता है। So this is how you will solve question number 4. Okay, the next question number 5 is expand and simplify. अब जो भी हम कर रहे थे ये उसका थोड़ा डिफरेंट है कि अब पहले हमने इसको एक्सपेंड करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। As we know the concept है, the number 4 will multiply with both these terms. 4 × 3 is 12 plus 4 into this will be, अब these two are different है, so just attach them. 4 × 28 स्क्वायर रूट। अच्छा, ये तो था एक्सपेंड हमने कर लिया, अब आगे क्या सिंप्लीफाई भी करना है आपने। अब 28 का जो स्क्वायर रूट है, we can make the factors of 28 in the table of 2, again 2, and then 7 ones the 7. So you can write 12 as it is plus 4. Now inside this square root sign, you can write 2 square multiplied by 7, because here we have a pair of 2. Then 12 plus 4. Now this square and square root will cancel each other. This 2 will come outside the square root sign, or 7 will remain inside because इसका square नहीं है। तो इस स्क्वायर रूट के आउटसाइड ऑलरेडी 4 है, ठीक है, तो ये जो 2 है ये जब आउटसाइड आएगा इट विल मल्टीप्लाई विद दिस 4। सो 12 प्लस 4 × 2 जो है वो 8 है, और √7 है। सो दैट्स इट, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ना करिएगा कि आप 12 और 8 को आप ऐड कर दें और 20 करके और √7 कर दें। अब जो स्टूडेंट्स ये कर दें करेंगे 20 √7 करेंगे, तो उनका ये रॉन्ग होगा, बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। अब जस्ट इसको ऐसे ही आप अज्यूम करें, सपोज अगर आपके पास 12 + 8x लिखा हुआ है, तो अब दीज आर नॉट लाइक टर्म्स है, आप इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इफ somebody will do this one as 20x करेगा, तो अगेन देयर विल बी अ क्रॉस, बिकॉज यू कांट डू दिस वन, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही आपका आंसर होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, expand and simplify. Now outside we have a third, so when it will multiply with this 6, so you write the number first, 6 √3, then plus, now this third when it will multiply with this one, so you can write 3 √ multiplied by 8 √. Okay, no change in the first third plus.
So just recall those rules. Rule number 1, when two separate surds are multiplying, we can write it under one square root sign like this one. Again, no change over here. Plus 3 8s are 24. This one. Okay, now you can make the factors of 24. Prime factors. It is 12 times 2, 2 times 6, 2 times 3, 3 times 1. So you can see you have a pair of these two. So 6 under root 3 as it is, plus we can write 2 square into 2 into 3. This one. So 6 under root 3 plus. So this square and square root will cancel and this 2 will come out. Under root you will have 2 into 3 because इनके squares नहीं है so they will remain inside. So the last step will be 2 and then under root 6. Again you can see you have the different surds. Surds different है, we can't simplify. You will not do 6 plus 2 8 कर ले. वो condition ये होती है if we have the same surds then we can add or subtract their coefficients. Otherwise we can't. So this is the answer. Simplest form इसका यही simplified form है इसकी. So in this video we have learned how we add and subtract the surds. जिसके factors बनते हैं वो अपने factors बनाने होते हैं. अगर आपके like surds हैं फिर हम उनको simplify कर सकते हैं. अगर वो unlike है, different है तो फिर आप उसको वहीं पे stop कर दें. That will be your final answer है. इन surds को आप multiply कैसे करते हैं, इनको हम divide कैसे करते हैं, उनके लिए मेरी सेपरेट वीडियोस हैं तो आई थिंक वो भी आप जरूर देखिएगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.